Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. And Bhatia's whole thing is कि उसने Basiir से revenge ले लिया है, कोई some revenge. Even though Bhatia didn't go out, और Bhatia also voted for Datta. मेरे को बोला था I love you like as a friend, like he was like, oh no, I love you like sorry. I'm like, don't do that then. 4 लोग एक सीजन से थे यार. There was Sohil, युक्ति, भाटिया, दत्ता from the same season. चलो दत्ता हमारी साइड से भी खेली थी. तब भी Kevin, सपना, आरुषि from the same season, right? मैं और काव्या were only the two people who were from the same season. बसीर अकेले था, लेकिन बसीर सबको जानता है, केविन सबको जानता है. All these people are friends with each other. युक्ति और चावला स्कूल से दोस्त हैं यार, 6-7 साल की दोस्ती. So how are we going to break that? And अभी तक गेम में सब दो ग्रुप कर रहे हैं. Nobody is actually seen that 2 नहीं 3 ग्रुप्स हैं. एक केविन वाला ग्रुप है, एक युक्ति सोहिल भाटिया वाला ग्रुप है, और एक हमारा ग्रुप था, मतलब जो रहा नहीं. So hi, welcome to India Forums first of all. Hello, thank you so much. Hey, hi, Anshul, how are you? Anshul, Moz, it's Anshul, okay, you I can said skip my Anshul. name. It's okay. Yeah. Okay, so talking about roadies and your journey, tell us how was your journey and what would you like to tell us about your journey? How was it? Moose. I will tell you my journey. So मेरी journey मैं बताती हूँ कैसे रही. पहले तो I was quite misunderstood. I was misunderstood. मतलब अगर एक character मैं हूँ तो misunderstood थी. मैं बहुत अच्छी हूँ ऐसे तो. मतलब मैं सबका करती हूँ और सबको good night, good morning, सब कुछ मैं करती हूँ. But फिर भी मेरे बारे में अफवाहें फैलाई गई थी by Kevin Al-Mustafar. उसने मेरे बारे में अफवाहें फैलाई और eventually मेरे को धोखे से out कर दिया. उसमें गौरव पिसा थोड़ा सा, but other than that मेरी journey ठीक थी. सब पहले से दोस्त थे, मेरे कोई दोस्त नहीं था. So गौरव ने वो हाथ बटाया और दोस्ती का, और हम लोग दोस्त थे. But other than that, I think my most strong bond was with Gaurav, and मुझे ऐसे ही चाहिए था. I wanted my strongest bond to be with my buddy pair so that we are on the same page. So my journey of the 3 vote outs से पहले, like it was a good time. I enjoyed myself, and tasks maybe I was performing, so I was happy. The only thing is I wish I had some more time with other people. Probably I think the time was a little less for me to bond with everybody. Right. Whereas Gaurav people had seen on roadies before also on Splitsvilla. आपको पता है मेरे को शो के हेड पे जाके पता लगा कि गौरव Splitsvilla जीता था. Okay. That's Gaurav, why do I you was want to like, say oh. something on this? I think Okay, Gaurav, tell us about your journey. How? What about you? How has your journey been with roadies? it was extremely different. Like I don't think जो पहले 2 reality shows करें. I did Roadies earlier, right, which was about 5-6 years ago. फिर Splitsvilla करा. Roadies में finalist था, इसमें Splitsvilla I won, right, in 10 days. So those 2 shows मेरे लिए बहुत different है, especially because Roadies में format अलग था, gang leaders थे, all of that was there. So at any given point of time आपके पास लोग थे, there were leaders who you could go up to, जिनसे आप advice ले सकते थे, task में समझ सकते थे क्या है क्या नहीं, because they had that kind of experience. This time हमारे लिए पूरा role reversal हो गया, right, because firstly there was no gang leader format, right, and then Right. The format was X versus new with Sonu Sood sir. So end of the day, as far as roadies is concerned, जो ex roadies थे, those were the people with the most amount of experience in roadies, right? So चाहते ना चाहते आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई, right? Especially आपके buddy pairs हैं who have not played this kind of game earlier, right? So I was like कि अच्छा okay, we'll have to actually be a lot more responsible this season. और मैं अपनी personal जिंदगी में भी शायद थोड़ा पहले से ज़्यादा जिम्मेदार हो गया हूँ. So I think it came very organically to me, but it was quite a journey, very very challenging, क्योंकि 10 मंजे हुए खिलाड़ी आए. Even the new roadies were very strong. Moose was there, right? I think it was a very very smart choice of on my part to having picked Moose as a buddy pair. Not just smart, I think अगर हमारी एक बहुत genuine अच्छी conversation हुई थी जिस दिन हमने बड़ी पेयर्स फॉर्म करे, एंड अगर वो नहीं हुई होती तो शायद हम नहीं होते, एंड अगेंस्ट खेल होते शायद. बट आई एम ग्रेटफुल दैट वो कॉन्वर्सेशन हुई, एंड आई एम ग्लैड दैट मूज और मैं एक बड़ी पेयर बने. एंड अक्रॉस ऑल द 10 न्यू रोडीज, आई डोंट थिंक आई वुड हैव पिक्ड एनीबडी एल्स अदर देन मूज. So I think it was a very enriching experience यार. इस बारी के टास्क भी बहुत अलग टाइप के हैं, बहुत एक अलग एक्सपीरियंस है, एक जर्नी है. मेरे सीजन में हम बाइक्स नहीं चला पाए थे यार, एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था, we couldn't even drive the cars. So इस सीजन में बाइक्स चलाने को मिली, अच्छे टास्क, bungee and all, यार, surfing and all. So it was just amazing. बहुत challenging इसलिए था because ex roadies थे,
और सब खेले हुए हैं गेम ये पहले, so everybody you know they pick the best of the lot and they put them together. और बहुत सारे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स थे, मुझे लगता है मेरे और काव्या के सबसे कम थे, बाकी सब लगभग एक दूसरे को जानते थे वहाँ पे. So Okay. वो I don't want to cry about it, but honestly it was when we started the game तो एक clear disadvantage था हमारे पास कि हमारे पास कम relationships हैं. So उस मायने में challenging था, but it's also very fun and refreshing. Right. So talking about your elimination, इतना शो के इतने शुरुआती दौर के में एलिमिनेट हो जाने पर what do you think, what exactly went wrong on the part of you two के that caused your elimination? What are your thoughts on this? Nothing. Absolutely nothing. I think this question is phrased incorrectly. Phrased. I think what you meant is what went wrong in the minds of other people, Okay. what they did wrong. That I Okay. can tell you. So one, Basir didn't, I think, fight enough. I think actually क्या था, because we'd been targeted from the first vote out. एक तो ना थोड़ा सा सारे थक गए थे, मैं तो भाई थक गई थी अपने आप को बचाती बचाती. I was like, yo, एक vote out तो बैठो आराम से, like so वो हो नहीं रहा था. So when you constantly have to fight for somebody, I think Basir at this point was like, because he also lost Datta, he started thinking कि मैं अपना कैसे देखूं. So I think in that, not that he was being selfish, वो थोड़ा सा he didn't know how to save us also and himself also. Right. Because he was like, okay, I've already lost Datta. If I lose these people, I will have to think about myself. So he No, was but in that dilemma. Very very true actually. Yeah. I mean I remember जब हमारे बड़ी पैस भी फॉर्म हो रहे थे उस दिन मेरी बसीर से कॉन्वर्सेशन हुई थी कि यार बसीर हम तब तक हमने डिसाइड कर लिया था कि मैं बसीर दत्ता और काव्या एक साथ खेल रहे हैं अमंगस्ट द एक्स रोडीज. बट जब आप बड़ी पैर फॉर्म कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नए जो रोडीज हैं उनके क्या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं वो भी देखें. एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर मूज, अंगद, तनिश एंड अर्श वो एक टास्क साथ में जीते थे एंड काइंड ऑफ वहां पे कुछ हो रहा था. एंड आई ट्राई टॉकिंग बसीर एंड दत्ता कि यार हम चार वो चार अगर एक साथ होते देन इट बी गुड. बट बसीर वांटेड टू प्ले हिज ओन गेम वहां पे भी, Yeah. right? I was like, okay, I mean, I'm not going to force you to select your body pair as per what I am saying. हम साथ में खेल रहे हैं, but अगर हम वो करते तो एक 8 स्ट्रॉन्ग का ग्रुप बनता. क्योंकि हमारा जो वोट आउट हुआ उसमें जो 2 लोगों ने हम अपने वोट वेस्ट करे उससे कंफर्म हो गया कि हम वोट आउट हो रहे हैं, which were number 1 सिद्धार्थ and number 2 नंदू had an advantage because 2 वोट थे और उसने सिड और काव्या को डाल दिया, which was clear, wasted votes क्योंकि केविन उसके पास गया था उससे पहले and Kevin scared the shit out of सिद्धार्थ and नंदू. तो हमने वो लोग पिक करे जो डर के खेलने वाले, राइट? सो आई थिंक दैट इज वेयर इट ऑल वेंट रॉन्ग. एंड एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रॉन्ग यूनिट, एक स्ट्रॉन्ग, भले ही आपके पास नंबर्स कम है बट जितने नंबर्स हैं वो अगर एक जगह वोट कर रहे हैं ना, देन इट मेक सेंस. लाइक आरुषि दत्ता गॉट वोटेड आउट बिकॉज एक क्लियर कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ. आई केप्ट टेलिंग देम कि यार वोट आउट में जाके डिस्कशंस नहीं होती है, वोट आउट से पहले डिस्कशन होती है एंड देन वी गो इन विद अ क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ दत्ता गॉट वोटेड आउट. So obviously next number मेरा और मुस्कान आने वाला था, right? Because Basir was with Jashwant. Jashwant is Nandu's boyfriend and Nandu is with the other team. So he kind of has a shield going on. He already has like an unset immunity going on throughout the game. Mm-hmm. So that was that. Do you guys think that he betrayed the two of you? What do you think on this? No. The deal he made. Betrayal It wasn't would be a betrayal. strong word. Absolutely, Yeah. but betrayal किसी मायने में नहीं था. मुझे लगता है कि ये डील थोड़ी अलग तरीके से उसको अप्रोच करनी चाहिए थी, जहां पे मुझे और मूज को इम्यूनिटी दे रहे थे एंड वी वुड हैव मेड अ डील कि आरुषि और अर्श को वोट नहीं करते हैं. बसीर नोज, आई नो, मूज नोज. अगर हम एक बार अपनी जुबान देते हैं और हमने पूरी गेम ऐसे ही खेली कि एक बार हमने जुबान दे दी तो दे दी. वी नॉट, मैं आई वुड रादर गो आउट ऑफ द शो than come off as a liar or than come off as a person जो झूठ बोलता है, धोखा देता है, धोखी धड़ी से गेम खेलता है, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं. Right? And end of the day, this is a show about personalities. आप कैसे इंसान हो, it's a show about that. Right? So it was just that. I just feel like he should have been a little more smart about this. And the worst bit was आप एक वोट आउट पहले आप भाटिया को वोट आउट कर रहे हो और मैं कॉन्स्टेंटली आपको बोल रहा हूँ भाटिया आपका दोस्त है, तो वो दोस्ती दिख क्यों नहीं रही है, वो उसकी लॉयल्टी दिख क्यों नहीं रही आपकी तरफ. तो उसके वर्ड पे काउंट करना was a mistake. And it was just a mistake. मेरी understanding है, I think Moose has different opinions about it. But betrayal किसी मायने में नहीं था. Moose, what do you have to say on this? No, I don't think it's betrayal from him. It's definitely betrayal from the other people, like from Absolutely. Ashish, Sakshi, Kevin. Like I'm उनसे actually उम्मीद भी वही confused. थी. हाँ, that is called betrayal. Because कहीं ना कहीं वो हमारे friends थे. All of them were our friends. हमारा एक relationship था. तो उसमें जब झूठ बोल के करते, that's betrayal. With Basir, it was more that I didn't think कि वो उसमें ना, and I've said this on the show also,
उसमें उतना डर नहीं था जितना मेरे और गौरव में था, because honestly he hasn't been voted since the first vote out. So वो अपने आप को टारगेट like कह रहा था कि उस दिन मैं भी हूँ, but he wasn't, like he hasn't been the target. So उसमें वो भी डर नहीं है जो मेरे गौरव में पहले से ही था, क्योंकि हम कुछ भी गलत करेंगे ना तो we can go out of the show. हम कुछ भी गलत करेंगे तो day one. Yeah. We were targeted since day one. Right. तो वो उस हिसाब से सोच नहीं रहा था. Like Right. if coming Gaurav would have been in place, then Right. we wouldn't have done this. So coming on the being targeted part, what do you think? Why do you think you guys were always, you two were a great competition to everyone? What is your thought on this? Like you said, Anchal, I think it was 100% because they were scared. Number one, because we were very good competition. Sohail भी दिखते हुए दिखा है बोलते हुए कि competition को निकालो, competition है, strong competition क्यों नहीं निकाल रहे? So basically, Sohail has said कि यार he's not competition enough या उसकी फटती है, right? And other people are resonating with that thought. तो basically उनको डर लग रहा था कि ये strong competition है. So I don't see any other reason but the fact that we were strong competition, which is why we were being targeted since day one. Number two, I misunderstand कर रहे थे moves when roadies इतनी fast paced, Big Boss you've done earlier moves. वहाँ पे आप बैठ के दिन भर आपके पास बात करने का टाइम है, सब चीजें यहाँ पे you're traveling, you're doing your tasks, then you're planning, then vote outs. And लोग बहुत अपने अपने में रहते हैं. Like in roadies, हाँ जो बन गए friends वही थे. Right. Yeah. So उसमें it's hard for हाँ. I'm sorry. And one big thing we are overlooking. I'm sorry, Moose, I'll be done in a minute. Then just speak. The big fact that existing relationships आई थी show पे. When we started off the show, 4 लोग एक season से थे यार. There was Sohil, Yukti, Bhatia, Datta from the same season. चलो दत्ता हमारी side से भी खेली थी. तब भी Kevin, Sapna, Arushi from the same season, right? मैं और काव्या were only the 2 people who were from the same season. बसीर अकेले था, लेकिन बसीर सबको जानता है, केविन सबको जानता है. All these people are friends with each other. युक्ति और चावला स्कूल से दोस्त हैं यार, 6-7 साल की दोस्ती. So how are we going to break that? And अभी तक गेम में सब दो ग्रुप कर रहे हैं. Nobody is actually seen that 2 नहीं 3 ग्रुप्स हैं. एक केविन वाला ग्रुप है, एक युक्ति सोहेल भाटिया वाला ग्रुप है, और एक हमारा ग्रुप था, मतलब जो रहा नहीं because सब बाहर निकल गए. So everyone's been overlooking. Now the question arises, what's going to happen next? क्योंकि एक ग्रुप तो आपने खाली कर दिया, अब कौन लड़ेगा और कौन बाहर जाएगा? That's the question. So Gaurav, talking to you, do you think ये जो pre-formed alliances जो आप शो से पहले नहीं थे, did you feel out of place या कहीं stranded या कुछ ऐसा feel हुआ because you did not have any alliances before the show, like any pre-formed alliances? यार ऐसा उनको फील होता है जिनको डर लगता है जिंदगी में. मुझे डर नहीं लगता because I'm a very very secure person like that, right? मैंने पहले भी गेम खेली हैं जहाँ पे मेरे कनेक्शंस थे, जहाँ पे मेरे कनेक्शंस नहीं थे, right? हम जब गेम खेलते हैं तो गेम को एक ऑनेस्टी और एक अप्रोच के साथ खेलते हैं. हर किसी का अपना तरीका है खेलने का. मेरा तरीका that I play with integrity, honor, respect, right? And that's what I've told Moose and all the other people I've played with throughout the game. कि मेरा यही तरीका है, मैं ये तरीका नहीं बदल, क्योंकि ये मेरी जिंदगी के उसूल है, मैं ये उसूल नहीं बदल सकता एक गेम के लिए. It's as simple as that. तो डर बिल्कुल नहीं था, एक नेचुरल डिसएडवांटेज था, बट जब आप गेम के लिए साइन अप करते हो तो आपको पता है कई बारी गेम आपके हित में जा सकती है, कई बारी गेम आपके हित में नहीं जाएगी. Absolutely. So it's just playing the game in the flavor of the game in all fairness. Yeah. Right. What do you think of the forever changing priorities of the contestants in the show? Moose, you take this one. यार कुछ स्टैंड ही नहीं है लोगों का, फटी में खेल रहे हैं. They don't have a stand. Honestly, जितना मेरा स्टैंड है गौरव, like I didn't even know Kavya, ठीक है, but as soon as Gaurav said कि Kavya is my number 1 priority, she was my number 1 priority, and there's no questions about it, because sometimes you have to do things for your buddy bear, and that's what was important to me, ठीक है. And with like Bhatia कह लो, or even Kevin कह रहा था मुझे चावला को जिताना है, then मेरे को साक्षी को जिताना है, then मेरे को खुद जीतना है, and then Bhatia was saying he was playing alone, but so that you shouldn't do. You should be pretty transparent and honest about your game and then see how it goes. और ऐसा नहीं है गेम में लोग देख नहीं सकते. Yeah, I'm sorry, Moose, continue. I'm just saying कि ऐसा नहीं कि लोग देख नहीं सकते. जब आप गेम खेल रहे हो आप सबके कैरेक्टर्स देख सकते हो, सबकी पर्सनालिटीज देख सकते हो, right? That's why I am really really fond of Moose, क्योंकि जो है सामने यार मुंह पे है, you take it or you leave it,
राइट? तो बेसिकली हम छाती ठोक के खेलते हैं यार, सीना ठोक के खेलते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर, यू टेक इट और यू लीव इट, राइट? वी आर नॉट गोइंग टू बी लाइक ओ आपसे भी दोस्ती करनी है, ओ आपसे भी दोस्ती करनी है, ओ 20 हो गए, 20 मेरे दोस्त है, नहीं है दोस्त। हमको पता है आप किसके बारे में क्या बोलते हो, और पीछे सबने बहुत लोगों के बहुत कुछ बोला है, राइट? सो इट्स जस्ट अबाउट दैट। Right. So, like you mentioned earlier, Gaurav, कि मूव्स को बहुत लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया. Do you think this was also one of the reason that you were also targeted because you आप दोनों एक बड़ी पैर थे? 100%, 100%, एंड आई थिंक ये मेरी और मूस की डे वन कॉन्वर्जेशन हो गई थी, क्योंकि Yeah. मैं भी अपने सीजन में आई बीन अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, एंड जब इस बारी भी आया था तो आई वाज एक्चुअली वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ माय फिजिकल फिटनेस, सो आई न्यू कि यू नो लोग मुझे टारगेट करने वाले हैं, एंड आई न्यू मूस को मैंने बिग बॉस ओटीटी में देखा था, एंड आई न्यू शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर एंड शी इज वेरी वोकल, शी इज वेरी ओपिनियनेटेड, तो लोग एनीवेज को टारगेट करेंगे। And जब ये आई थी शो में तब तक लोग इसको ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंड कर चुके थे, उसके बाद हमने बड़ी पेयर फॉर्म करा है, उससे पहले नहीं फॉर्म करा हमने, उसके बाद बड़ी पेयर फॉर्म करा है। सो द डे वी साइंड अप विद ईच अदर, हमको पता था कि हमको तो टारगेट करने वाले हैं, और हमको उस चीज से डर नहीं था, हमको बस जो जब धोखाधड़ी होती है ना, जब एक बंदा आपको मुंह पे अच्छा बन रहा है, भाई बोल रहा है, बड़ा भाई बोल रहा है, भाटिया केप्ट कॉलिंग मी आप बड़े भाई जैसे हो, और हमने भाटिया को एक भी वोट नहीं डाला है, राइट? इट वाज बसीर हु एक्चुअली वोटेड अगेंस्ट हिम। उसके बाद आप झूठ बोल के, केविन ने बोला इट्स अ डील, फिर आप झूठ बोल के, तो वो दुखता है वो चीज, यू नो, कि यार ये तो सीधा मुंह पे बोल के भी कर सकता था ना, मत देते इम्यूनिटी, ना उतर देते इम्यूनिटी, छोड़ देते, किसी को भी नहीं देते। Bhatia's whole thing is कि उसने Basiर से revenge ले लिया है, कोई some revenge, हाँ, even though Bhatia didn't go out. और Bhatia also voted for Bhatia Datta. और So I भाटिया ने don't. भी इन टर्न वोट करा था, एग्जैक्टली, Yeah, so nobody talks about that. कोई बोलता ही नहीं है वो, but Bhatia is not as much of a savior as he likes to think. जैसे वो अपने आप को अभी दिखा रहा है, like दिखा रहा है। I am kind of friends with him, but I would say कि जितना वो अपने आप को दिखाते हैं कि मुझे वोट कर दिया, मुझे वोट कर दिया, like I think that's quite egotistical of you to think कि तुम्हें तो कोई वोट ही नहीं कर सकता. At the end of the day, you come to play, and तुम इतनी छोटी सी चीज पे मुझे वोट डल गया है, तुमने किसी को निकाल ही दिया है. Who you say is your भाई, who is your friend. मेरे को बोला था I love you like as a friend, like you know, he was like oh no I love you like sorry. I don't do that then. तो अगर तुम इतना अपने उस पे ले गए हो, you know. Right. Moose, now that you've been a part of both Big Boss and Roadies, what do you think is the difference between the two shows, and which show did you enjoy more? Both were very tiring for me. यार मैं ना I think I come off as this very hard person that's like hard to crack and maybe intimidating, but I'm not. आप मेरे साथ एक मिनट भी बैठो, like I'm very kind in the sense मैं बैठ के बात कर लूंगी, कोई करता ही नहीं है. You're So very both kind that kid. वो होता ही नहीं है. बिग बॉस में भी जाते ही because I was the youngest, I was targeted. इसमें भी I was, मतलब मेरी बात नहीं होती थी किसी से पहले. So in terms, both are very tiring and taxing, but I would do Big Boss if I had to choose because I can rely on the audience to at least know who I am. With Roadies, I can't rely on anybody. It just मतलब अगर ये लोग effort नहीं डालेंगे मुझे जानने का, then फिर कुछ नहीं होगा मेरा. Then I'm out. So I like Big Boss more in that और sense. एक मेन जो रीजन है ये तो बता दे, मेन रीजन इसका ये है कि बिग बॉस में जी कैमरे लगे हुए हैं आपके, हाँ. राइट? जब ऑन द कैमरा आप कहीं भी जा रहे हो, आपको यू नो रुकना नहीं है, you know. Roadies is shot in a very different way because you're on the road Right. constantly, right? So you have to wait हाँ. for the cameras to arrive, all of that to actually express And you yourself. have to sit in the sun. तो धूप में शूट करना पड़ता है. So that Big Boss तो बहुत ही, it's the best place for a lazy person I think like me. So बहुत मजा आया. Okay, lastly, what is that one thing that you'd like to say to everybody who's going to be very disappointed with the eviction of the two of you? यार रास्ता भी बहुत लंबा है and it's a good show. Honestly, I think me and Gaurav did really well in this show. But अगर आप सिर्फ शो की बात करो, then other contestants are also like it's becoming a good show. I'm enjoying watching it. So I know that people will be disappointed that me and Gaurav aren't there genuinely. But I think there's other people that you should be watching. And हमारा पीछे थोड़ा सा छोड़ो, हमें थोड़ी देर के लिए relax करने दो. We are watching it with you guys. Yeah. Gaurav, do you want to say something? I just want to say, guys, हम लोग you know, हमसे पहले शो आता है, हम हैं क्योंकि शो है. So Yeah. You know, we've been getting a lot of messages, you guys are out तो शो नहीं देखने वाले, ये वो. Don't do that. Watch the show, enjoy the show, because शो की वजह से हम हैं, हमारी वजह से शो नहीं है, right? Yes. And just be kind, यार, just be kind to each other. मतलब अभी तक हमने एक तरीके से गेम खेली है, and that is how we are. So just, you know, we don't want to spread a negative word around for anybody. भले ही धोखा दिया नहीं दिया, कुछ करा नहीं करा, it's वो उन पे दर्शाता है, वो उन पे रिफ्लेक्ट करता है, हम पे नहीं. And
yeah, that's just be The kind. show is over. The show And is the over. show- All good. Yeah. So keep Thank watching. you, Yeah, guys. keep watching. Thank you. It was Never nice stop. talking to you. All the best. Thank You too. Bye. Thanks. Bye.